Hello friends, welcome to Ecoholics YouTube channel. My name is Avinash and in this video I'll be discussing with you important economics current affairs for 10th August 2024. So I have selected 3 articles from the Mint newspaper. अगर आपने मेरा कल का सेशन देखा है, so you know that RBI's monetary policy has monetary policy committee की मीटिंग हुई थी. उसके बाद गवर्नर स्टेटमेंट रिलीज होता है and that governor statement is what we had discussed in yesterday's lecture. अब अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो आज के जो मेरे पहले 2 आर्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू. बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट? एंड both the first 2 articles are talking about RBI's monetary policy stance, कि how appropriate is the stance, जो RBI की पॉलिसी है सही है गलत है कैसी है, so on and so forth, right? So both these articles are fairly positive articles, ठीक है, जो कि बता रहा है कि जो आरबीआई कर रहा है वो काफी सही कर रहा है. एंड द थर्ड आर्टिकल इट्स टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, 5 स्कीम्स दैट वर अनाउंस्ड इन द बजट. तो इस साल के बजट के अंदर there were 5 new schemes regarding employment generation, regarding skills development, and regarding the upgradation of ITI. So will these 5 schemes be able to solve the employment problem in India? Yes or no? If no, why no? Right? So that's the kind of discussion that is going to happen in this third article. So let us start with our discussion. पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर मैं क्विकली बात कर लेते हैं, राइट? सो देखिए यूएस के अंदर जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाएगा, राइट? बिकॉज यूएस के अंदर अपेरेंटली वहां पर जॉब्स जो है क्रिएट नहीं हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एंड देयर आर सम रिसेशन रिलेटेड टॉक्स, ठीक है? तो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, बट जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई है इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दैट आरबीआई इज इन नो हरी टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, राइट? सो आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को रिड्यूस नहीं करा है. रेपो रेट, as I explained yesterday, is the rate at which RBI lends money to commercial banks, right? So RBI ने अपनी रेपो रेट को कम नहीं करा है, okay? And simultaneously RBI ने कहा है to bring inflation down in India, we will withdraw accommodation. Withdraw accommodation का मतलब ये होता है that we will keep a tight lid on liquidity conditions. We will not allow liquidity to grow because we want to make sure that inflation comes down, ठीक है? As I explained in yesterday's lecture, high food inflation इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर आप रीसेंट डेटा देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन जो है इट हैज इंक्रीज टू 8.4%, राइट, फ्रॉम 7.9% इन मे, राइट? सो 8.4% ईयर ऑन ईयर, यानी कि अगर आप जून के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे, राइट, इन 2024 with let's say जून का प्राइसेस इन 2023, so there's an 8.4% का इंक्रीज, ठीक है? So this is problematic. Vegetable and edible oils के prices in India have been increasing, ठीक है? So this is where RBI is stuck. RBI कह रहा है कि food inflation ज्यादा है, इसीलिए जो है हम लोग interest rates को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? Like I have explained to you in yesterday's lecture, इंडिया का जो retail inflation का basket है उसके अंदर approximately 50% of the items are food related items, okay? So ये food related items जो है जब तक इनके prices कंट्रोल में नहीं आते हैं तब तक RBI will not, तब तक RBI will not be able to reduce the interest rate, right? अगेन मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मैंने कल कहा था, बट वी एक्चुअली डिस्कस, हमने मेहनत करी थी कल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, राइट, कि RBI कह रहा है कि अगर फूड इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी होता, यानी कि इफ द फूड इन्फ्लेशन देयर आर हाई प्राइसेस टुडे बट दोस प्राइसेस विल नॉर्मलाइज इन 15 days, राइट? Had food inflation been transitory, then we could have overlooked food inflation. But in India, food inflation is persisting week after week, month after month, quarter after quarter. So we cannot afford to ignore food inflation. ठीक है? The idea over here is that despite the fact that core inflation जो है वो काफी moderate हो चुका है, काफी कम हो चुका है, but there are going to be risk of spillovers. There is going to be a risk of second round effect. What is spillover or second round effect? That let us say food prices remain high, so लोगों को ये लगेगा that prices in general are high. If people feel that prices in general are high, they will start demanding higher and higher wages from their employers, let us say. If wages become higher, then the cost of production will become higher, then prices will actually become higher, right? And then you will have a long term inflation or a very sticky inflation into your economy, जो कि जाएगा नहीं आसानी से, ठीक है? So this is what the
spill over or second round effect is. So we cannot afford to have this kind of chain reaction play out. We cannot afford that. That is why we need to do something about it. That is why RBI is being very hawkish. It is saying that we will bring inflation down to 4% level, right? Come what may. Okay. So obviously we are also looking at supply side factors. Monsoon is going normal. Farm supplies look to be going in the right direction, right? हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ इज ऑलरेडी गुड. ओके, आरबीआई इज प्रोजेक्टिंग 7.2% ग्रोथ रेट इन 24-25, विच इन माय ओपिनियन इज अ कंजर्वेटिव ग्रोथ रेट. सो ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आई डोंट थिंक दैट देयर इज टू मच ऑफ अ कंसर्न इन इंडिया, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल कंडीशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट. आरबीआई का फोकस इज कंप्लीटली अपॉन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, राइट. बट यू विल हैव टू look at what US Federal Reserve is doing. यही चीज हम अगले आर्टिकल में भी डिस्कस करेंगे, so I'll not elaborate too much over here, right. Apart from that, you know what else is important over here, ठीक है. So I think that yeah, that's about it. Next article के अंदर let's discuss what's happening, ठीक है. So I'm just going to cut through the fluff and just come to the point, main point over here, right. So see, the idea over here is that आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर देयर आर 6 मेंबर्स. ओके, आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स, 2 members, that is जयंत वर्मा and आशिमा गोयल, right, they have consistently argued that we must reduce our policy rate or we must reduce our repo rate, right. And we must change our stance from, let us say, withdrawal of accommodation to neutral, right. So ये लोग क्या कह रहे हैं कि stop attacking inflation so aggressively. It's not desirable, because in the process of attacking inflation so aggressively, what you are doing is you are also attacking growth, you are also attacking demand, right. Because when you keep interest rates up, that means that you're trying to pull demand back, and when you're trying to pull demand back, you're going to hurt production. If you're going to hurt production, you're going to hurt growth. So what they are saying is that it is not desirable, you know, this kind of an attack on inflation which is going to have such a huge collateral damage. This is not desirable. This is my understanding, right. बट होता कैसा है ना कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर देयर आर 3 members फ्रॉम आरबीआई, राइट. देयर आर 2 members आउट फ्रॉम आउटसाइड, एंड देन देयर इज गवर्नर ऑफ आरबीआई, राइट. सो द आइडिया ओवर हियर इज दैट कि सॉरी 3 members फ्रॉम आरबीआई एंड 3 members फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ओके. एंड 3 members फ्रॉम आरबीआई मतलब गवर्नर आरबीआई इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दोज 3 members, ठीक है. सो गवर्नर हैज गॉट अ कास्टिंग वोट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्टिंग वोट? कि लेट अस से एवरीबॉडी वोट्स and there is equality of votes कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. So that in that situation governor will have a casting vote, meaning that whatever governor decides, right, whatever Shaktikanta Das will decide will be the policy, ठीक है. So Shaktikanta Das has made it clear time and time again कि interest rate cuts जो है it's too early to talk about it, right. We have a global economic environment which is uncertain, and we have consumer inflation which is high in India, right. So he has time and again said that very clearly and very unambiguously we are focused on inflation, ठीक है. So like I said कि यूएस के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, right. So यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है that is showing that वहां पर hiring is slowing down. It is showing that unemployment जो है वो काफी ऊपर है, काफी हाई है in US as of now as compared to last 2-3 years, right. So जब यूएस के अंदर मार्केट्स ओपन हुए, स्टॉक मार्केट ओपन हुए मंडे को, so there was a significant fall in a variety of stocks, not just in US but across the world, right. And almost every, you know, stock market related WhatsApp group suddenly started talking about recession as if, you know, everybody is a pandit and an expert in understanding what is happening in the US economy over there, right. Now the idea over here is there is something called as SAM rule, right. I'm not sure whether you have heard of this, but the SAM rule says that a 3-month moving average of unemployment of 50 basis points higher than the lowest in the previous 12 months is taken as a signaling the onset of a recession. आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा वहां पर रेगुलरली निकलता है, अच्छा डेटा निकलता है, प्रिडिक्टेबल एंड बिलीवेबल डेटा निकलता है. सो 3 months का डेटा उठाइए, उसका एक मूविंग एवरेज बनाइए, राइट. So 3-month moving average of unemployment of 50 basis points or higher than the lowest in the previous 12 months is taken as signaling the onset of recession कि recession आने वाला है. तो आपके पास 12 महीने का डेटा है, आप जो है क्या करिए, 3 महीने का डेटा का मूविंग एवरेज बनाइए.
अगर अनएम्प्लॉयमेंट इज 50 basis point or higher than the lowest of the past 12 months, that means recession आ सकता है, right? It's just आ सकता है, it's not कि आ गया है, right? So the idea is that stock market started anticipating, believing, hoping that US की Federal Reserve will reduce rates, interest rates, and RBI will also reduce interest rates, right? Why is it that the stock market is so interested in getting the rates reduced? Because जब interest rates reduce होते हैं तो there is a influx of capital that happens in the economy, and some part of that capital will find its way into the stock market directly or indirectly, right? And there is going to be a likely increase in prices of stocks because of that. That can be one reason. Another reason is that if you are taking, let us say, an accommodative monetary policy or an expansionary monetary policy to support the economy, then that means that कि आप पैसा डाल रहे हो इकोनॉमी के अंदर, लिक्विडिटी डाल रहे हो, which will boost demand, boost production, boost growth. So growth numbers अगर improve होते हैं, so that will be a net positive for everybody, right? So because of these things, एक expectation या एक hope develop हो गया था कि RBI will reduce the interest rates and so on, right? But RBI ने ऐसा कुछ भी नहीं करा. RBI जो हमेशा कहता है वही उन्होंने कहा कि बॉस, वी आर नॉट लुकिंग एट यूएस टू मेक अवर पॉलिसी, वी आर लुकिंग एट अवर ओन डोमेस्टिक पॉलिसी टू मेक अवर पॉलिसी, राइट? So obviously, we cannot ignore what the Federal Reserve will be doing, but we are not going to be driven by what Federal Reserve is going to be doing, right? So, and Shaktikanta Das didn't even talk much about that Black Monday कि जो stock market में गिरावट आई. They just talk about, global financial markets are exhibiting volatility, that's all, right? So they are completely focusing on domestic factors right now. They're completely focusing on Indian macros right now. They're completely focusing on the fact that their responsibility is to bring inflation down in India to 4% on a sustainable basis, right? जब बहुत ज्यादा उन्हें पुश करा गया टू स्पीक अबाउट यूएस में रिसेशन एटसेट्रा, सो ही वेरी क्लियरली सेड, एंड आई थिंक वेरी राइटली ही सेड, दैट इट वुड बी प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट अ रिसेशन इन द यूएस. डेटा आने दो, कुछ मालूम पड़ने दो, देखने दो क्या होता है. वहां की यूएस की सेंट्रल बैंक रिसेशन के बारे में इतना ज्यादा बात नहीं कर रही है, तो हमें इतना ज्यादा एज ऑफ नाउ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, राइट? as I have explained in yesterday's lecture and again, right, कि भले ही इंडिया के अंदर कोर इन्फ्लेशन इज डाउन टू 3.1%, राइट, बट वी कैनॉट इग्नोर फूड इन्फ्लेशन, राइट? व्हाई वी कैनॉट इग्नोर फूड इन्फ्लेशन? बिकॉज इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो अभी इंक्रीज है, दैट इज बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, राइट? एंड गोइंग अहेड जो फेवरेबल बेस इफेक्ट है वो भी जो है नहीं रहने वाला है, राइट? लाइक आई एक्सप्लेन्ड येस्टरडे कि जो इंडिया के अंदर डिसइन्फ्लेशन की पेस है, राइट, वो अनइवन है, स्लो है, right? We have not achieved our target. Like we discussed that high food inflation की वजह से second order effects generate हो सकते हैं, whereby actual में inflation आ जाएगा जो कि काफी sticky inflation रहेगा, like I explained above. Like we have discussed, food inflation से ही लोग inflation समझते हैं. So अगर food inflation is high, then that means that people will think that prices of everything is going up, and जो households की inflation expectations है वो अगर unanchored हो जाएगी, so then that will be deeply problematic. Apart from that, future inflation trajectory is dependent upon households की inflation expectations. So like I explained above कि अगर वो inflation expectation unanchor हो जाएगी, so future trajectory of inflation will actually go in the upwards direction, right? MPC, that is Monetary Policy Committee, it could have ignored inflation, but ऐसा कर नहीं सकते because food inflation is persistent, right? So that's what the governor is saying, right? So both these articles are, very interlinked with the discussion that we had yesterday. I'm emphasizing again that please have a look at yesterday's discussion. Now, based on these two articles, I have created two very similar questions for you, right? I will read out the smaller question. Please try to attempt this question on your own. Evaluate RBI's decision to maintain its monetary policy despite global economic shifts and domestic inflation trends. Discuss how global factors and domestic inflation impact the stance and its implications. So basically, to try and summarize everything that we have read between yesterday and today, I have given you two questions. If you attempt these two questions, you will be in a very strong position to talk about these issues in, let us say, your interviews, or to write about these issues in your answer sheets and so on. Going to the third article, before that, if there is any doubt, please feel free to ask. I would really love to see some comments in the comment section offline,
right? Once the video is available on YouTube, I really want to see your comments. You can try to summarize, you can try to give your own commentary. What do you think about what's happening in the Indian economy, in the US economy? Because if you don't articulate your thoughts, you will never become an independent thinker, and ultimately you have to be an independent thinker. So please try to comment, and please try to intellectually engage with the video, not because I want your comments or anything, or I want some appreciation or anything. I just want you to be able to start articulating, and even if you're just reiterating what I have said or what we have read in the article, that's absolutely fine, right? But start commenting, okay? Start articulating yourself, okay? And see how others have reacted to your comments, see what others say about your comments. I will also try to respond. So let it be an intellectual forum, right? So that would be really good. I know that I'm asking too much from YouTube, but ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है. So yeah, let's talk about schemes which were created for boosting employment in India, right? So we have announced 5 schemes. Kul milake will be spending around 2 lakh crore for employment and skilling. Objective of creating 41 million jobs in the next 5 years. 3 स्कीम हमने जॉब क्रिएशन से रिलेटेड अनाउंस करे हैं, एक इंटर्नशिप से रिलेटेड अनाउंस करा है, और एक अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई से रिलेटेड अनाउंस करा है. So we will be speaking about job schemes and internship schemes in little bit of detail over here, right? तो एक स्कीम क्या है, that is called employment linked scheme, right? If you are a first time employee in the organized sector, तो आपको 15,000 rupees मिलेंगे, right? In 3 installments. You are a first time employee in organized sector or the formal sector, तो आपको 15,000 rupees मिलेंगे in 3 installments. Second scheme is related to the manufacturing sector, राइट? एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स दोनों को जो है वो ग्रेडेड पेमेंट्स देगा फॉर 4 years. सो इट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स को ग्रेडेड पेमेंट्स देगा फॉर 4 years. डिटेल्स विल कम आउट एज वी गो अहेड, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. थर्ड स्कीम जो है वो एक प्रकार से एम्प्लॉयर के लिए सब्सिडी है, दैट द गवर्नमेंट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग 3,000 rupees पर मंथ एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन. सो हर एक एम्प्लॉयर को जो है प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना पड़ता है. प्रोविडेंट फंड इज बेसिकली अ फंड फॉर द फ्यूचर, राइट? फंड फॉर द रिटायरमेंट of the worker, etc., right? So 3,000 rupees per month will be government's contribution on behalf of the employer into the provident fund. ठीक है? So एक प्रकार से जो एम्प्लॉयर को पैसा डालना पड़ेगा उसका बर्डन कम कर दिया है. ठीक है? So what is the first scheme doing? It is incentivizing the employees to join the formal sector. Second scheme is incentivizing both the employer and the employees, and the third scheme is incentivizing the employer to create jobs without worrying about the EPFO burden, right? अब देखिए ये तीनों स्कीम जो है, these are for enterprises that are registered with EPFO. इंडिया के अंदर कितनी enterprises EPFO के साथ registered है? Only the formal ones. The entire universe of informal enterprises is therefore not touched by these schemes. India के अंदर largest number of people are working in the informal sector. They will not be impacted in any way by these schemes, right? So the idea is that सबसे पहले you have to be registered, and second of all जो terms and conditions है बेनिफिट लेने के वो काफी ओनरस है, काफी डिफिकल्ट है. पहली स्कीम बोलती है कि आपको एज एन एम्प्लॉई आपको एक ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा. पहली स्कीम ये भी कहती है दैट इफ यू लीव योर जॉब विद इन 1 year, देन जो भी सब्सिडी दी गई है, राइट, वो सारी वापस देनी पड़ेगी. ठीक है? वो सारी की सारी सब्सिडी वापस देनी पड़ेगी. उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग वाली स्कीम है, दैट इज सेकंड स्कीम है, वो क्या कहती है कि आपके पास मिनिमम 50 वर्कर्स की हायरिंग होनी चाहिए, या फिर 25% ऑफ योर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स की हायरिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट? उसके बाद सेकंड स्कीम ये भी कहती है दैट दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव अ 3 year का ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईपीएफओ कंट्रीब्यूशंस. आप देख सकते हैं कि exclusions upon exclusions आ रहे हैं through these terms and conditions, right? So the idea over here is that there is going to be a lot of financial and administrative burden upon employers, that they will have to prove that they are eligible, they have to prove that they are satisfying all the conditions. ठीक है? Let us talk about the internship scheme. अब ये भी बहुत बढ़िया स्कीम है दोस्तों. internship scheme in India's top 500 companies. सुनने में बहुत मजा आया. This scheme is for those who are between the age of 21 to 24 and those who are unemployed.
and those who are not pursuing education, यानी कि जो IIT, NIT, IIM अच्छे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको जो है completely इस पर्टिकुलर स्कीम के बाहर निकाल दिया है, राइट। सिमिलरली इफ योर एनीबडी इन योर फैमिली इज अ टैक्स पेयर, तो आपको इस स्कीम के बाहर निकाल दिया है। सिमिलरली एनीबडी इन योर फैमिली इज एट गवर्नमेंट एट एनी लेवल, प्यून भी है, अगर कोई है, क्लर्क भी है, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है, राइट। सो यू आर स्टडिंग इन इंस्टीट्यूशंस, यू कांट, if you are a taxpayer, family member is a taxpayer, you will not get benefit. If anybody in your family is in the government service, you will not get the benefit. तो benefit दे किसको रहे हैं, right? So you can imagine that these are very difficult conditions. ठीक है? What is the problem with this approach, right? Last 7-8 years we are trying to create jobs in the economy, right? What is the problem with this approach? So biggest problem is over reliance on the private sector. 2019 के बजट के अंदर वी हैड रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस विद द होप कि प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा, विद द होप दैट इंडिया के अंदर अच्छा FDI आएगा, बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट जॉब्स विल गेट क्रिएटेड। बट हुआ क्या, दैट व्हेन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वाज रिड्यूस्ड, सो प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड, प्राइवेट सेक्टर ने अपने बैलेंस शीट को क्लीन अप कर दिया, अपने जो लॉसेस हैं, अपने जो स्टक इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को ठीक कर दिया। They didn't undertake any new investments, any massive investments. पीयूष गोयल etc. के जो है रील्स वगैरह चलने लग रहे हैं कि हाउ प्राइवेट सेक्टर को जो है अब आगे आके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो डिपेंडिंग टू मच अपॉन प्राइवेट सेक्टर since 2019 has not paid results, right. Secondly, we cannot solve the problem of employment without solving the problem of growth, and we cannot solve the problem of growth without solving the problem of demand, and we cannot solve the problem of demand without solving the problem of income, and we cannot solve the problem of income, especially at the bottom of pyramid, without solving the problem of economic stimulus. So ये सारी चीजें आपस में interlinked है. Jobs is linked with growth, is linked with production, is linked with demand, is linked with income, is linked with economic stimulus. So the author believes over here, right, that the government को पैसा spend करना पड़ेगा, right, and तब जाकर काम होएगा. Now where do you spend money? You can spend money in rural areas, on the informal sector, right. You can spend money by creating jobs in education, jobs in healthcare, jobs in public services. तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर फोकस होता है तो ना केवल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस इंप्रूव हो जाएगी, बट जॉब्स भी क्रिएट होंगे, राइट, द काइंड ऑफ जॉब्स दैट इंडिया नीड्स, एंड फिर देन उसके बेसिस के ऊपर एक पॉजिटिव साइकिल जनरेट होनी स्टार्ट हो सकती है। सो ना केवल वर्कर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, बट जो मार्जिनलाइज एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज भी मिलेंगी एंड जॉब्स भी क्रिएट होंगे। सो दीज आर माई 3 डिस्कशंस। फॉर द थर्ड आर्टिकल आई हैव प्लेस्ड अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट आई वांट यू टू अटेम्प्ट, that analyze the effectiveness of job creation measures जो कि अनाउंस करे गए हैं, critically evaluate the measures, right, and discuss the role of government versus private sector in employment creation in India. So these are my 3 articles. I hope that you have learnt a lot of new things in these articles. We'll meet again on Monday. Until then, thank you so much. All the very best and Jai Hind to all of you.